Hi students, it's another video lecture of class 12 biology, and in this particular video lecture we will discuss about the structure of a dicot and monocot embryo. Into the previous video lectures we have already discussed about how a dicot embryo will develop, and we will take a very peculiar example of a plant. The name was that plant is Capsella bursa pastoris. How the different stages will appear into the development of a dicot embryo. But in this particular video lecture, we will only concern with the structure of a dicot embryo and monocot embryo. If we will see the structure of a a dicot embryo, then here I will draw a dicot embryo already. In this particular embryo of a dicot plant, you will see at the tip of the radicle there is a root cap will present. There will be a root cap will present, and this root cap will cover a very special structure that is called the radicle, and this radicle ultimate give rise the root, or you can say that the root tip. And remember that there is a two cotyledons will be present, and two cotyledons, because it is a dicot, then similarly it's a very easy to identify. There will be the two cotyledons, and there is a very special structure will present where these cotyledons will end up. That particular structure is called as plumule, and this plumule, or it is called the shoot tip. Shoot tip means, remember that the plumule will give rise the shoot, where the radicle give rise the root tip, and root tip covered by a very special type of some cells that is called the root cap, and the plumule is situated where these two cotyledons will end up. Remember that this dicot embryo have a embryonal axis, that is the embryonal axis, and this embryonal axis, remember that these embryonal axis point out two very special terms. Where this embryonal axis will turn up or will end up, that whole part is called the epicotyl. Remember that the portion which will present above the embryonal axis, that is called the epicotyl. Okay, and the portion which will present below this embryonal axis, that is you can say that simply embryonal axis. This embryonal axis, or below this embryonal axis, the portion is called the हाइपोकॉटल. ओके, तो अगर आप एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में इसका जो एम्ब्रियो देखेंगे, तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले आप एम्ब्रियोनल एक्सिस को समझ लें. तो एम्ब्रियोनल एक्सिस जस्ट प्रेजेंट कहाँ होता है? ये प्रेजेंट होता है जहाँ पे कोटिलेडॉन्स जाकर एंड होते हैं, वो पोर्शन ही स्टार्ट करता है आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस. और ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जितना भी पोर्शन होता है, इंक्लूडिंग कोटिलेडॉन और प्लूम्यूल को, वो पूरा का पूरा पार्ट कहलाता है कोटिलेडॉन एपिकॉटल. और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के बिलो जितने भी पोर्शन होते हैं, जैसे रेडिकल हुआ, रूट कैप हुआ, उसको क्या बोला जाता है? हाइपोकॉटल बोला जाता है. So it is a very simple and very typical structure of a dicot embryo. Whereas अगर आप एक monocot embryo का स्ट्रक्चर देखें, तो वो quite complex आपको दिखेगा in comparison of dicot embryo. और अगर आप इसमें देखेंगे mainly, तो जो dicot का embryo होता है, उसमें एक single cotyledon present होता है. Sorry, जो monocot का embryo होता है, उसमें एक सिंगल कोटिलेडॉन प्रेजेंट होता है, और इस सिंगल कोटिलेडॉन को क्या बोलते हैं? एस्कोटिलम बोलते हैं. रिमेंबर दैट.
जो डाइकॉट का एम्ब्रियो है वहां पे तो 2 कोटिलिडॉन थे, वो जहां टर्न अप हो रहे थे, जहां खत्म हो रहे थे, वहीं पे प्लूम्यूल सिचुएटेड था, जिसे सूट टिप कहते हैं, जो प्लांट का सूट बनाता है। ठीक उसी के नीचे हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे का जो बिलो वाला पार्ट होता है डाइकॉट में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल रूट कैप होता है, और उसको बोला जाता है हाइपोकॉटिल। और इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के एबो जो पोर्शन होता है इंक्लूडिंग कोटिलिडॉन और प्लूम्यूल, उसको क्या बोला जाता है, एपिकॉटिल बोला जाता है मोनोकॉट डाइकॉट्स में। लेकिन अगर मोनोकॉट में देखें तो 2 कोटिलिडॉन नहीं होते, वहां एक सिंगल कोटिलिडॉन होता है, और इस सिंगल कोटिलिडॉन को बोलते हैं स्कोटुलम। और ये जो स्कोटुलम होता है, याद रख लेना, ये जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के लैटरल साइड पे, वन साइड पे प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है, इसके लैटरल या लैटरल साइड पे प्रेजेंट होता है, और सिंगल कोटिलिडॉन होता है, और इसको बोलते हैं स्कोटुलम। याद रख लेना, इस एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है, जो लोअर मोस्ट पार्ट होता है मोनोकॉट एम्ब्रियो में, उसमें एक तो आपको जो सबसे लोअर पार्ट मिलेगा, वो आपको मिलेगा, याद रख लेना, वो आपको मिलेगा रूट टिप, फिर उसके बाद आपको मिलेगा रूट कैप। ओके, और एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सीथ का लगा हुआ होता है, यानी अनडिफरेंशिएटेड सीथ होता है, जो कवर्ड करता है इस रूट कैप और रूट टिप को, और इसको बोला जाता है कोलियोराइजा। क्या बोलते हैं इसको, कोलियोराइजा बोलते हैं। सो रिमेंबर दैट मोनोकॉट एम्ब्रियो में एक ही आपका जो है कोटिलिडॉन होगा, उसको स्कोटुलम बोलेंगे, और जो इसका लोअर मोस्ट पोर्शन होता है इस मोनोकॉट एम्ब्रियो में, आपका एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे, उसमें रूट टिप होता है, रूट कैप होता है, और ये रूट कैप एक अनडिफरेंशिएटेड सीट से कवर्ड होता है, जिसे कहा जाता है कोलियोराइजा। रिमेंबर दैट जो इसका एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन होता है, ठीक है, वो एक लीफ प्राइमोर्डिया, ठीक है, को कंटेन करता है, और ये लीफ प्राइमोर्डिया अल्टीमेटली क्या देता है, लीफ को बनाता है। ये जो लीफ प्राइमोर्डिया होता है, ये कवर्ड होता है एक लीफी फोलियर स्ट्रक्चर से। इस लीफी फोलियर स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोलियोप्टाइल। ठीक है, तो कभी कभी पूछा जाता है व्हाट इज द कोलियोप्टाइल, सो यू कैन से दैट द कोलियोप्टाइल इज द लीफी फोलियर structure which covered the leaf primordia of monocot embryo, that is called the coleoptile, and where it is present just above the embryonal axis. Okay, and below this embryonal axis there is a root tip and root cap is present, and this root tip and root cap will surrounded or will covered by an undifferentiated seed, that is called the coleorhiza. So this is about the monocot embryo and dicot embryo, and near about that the label of this embryonal laxity, it's a very small leaf-like projections are present. There is not a clear-cut differentiation. What are these? That is called the epiblast. So this is a quite the structure of monocot and dicot embryo. Okay, I think you have I think it is not a much more difficult topic for you, but remember that two or three more important points about the coleorhiza, coleoptile and scutellum, because in board examinations one or twice mark question can be created from scutellum, coleoptile and coleorhiza, and this one very important dicot embryo structure. So hope you will understand all the parts very well. Into the next video lecture we will talk about some new topics.
Till then, bye and stay happy.